DG Raju Bhargav sir, respected Commissioner of Police Anupam Gehlot sir, Raghavendra Bhatt sir, Jigyasa ma'am, Bipin Aire sir, Vivek Khare, Vinay ji, and all their colleagues, Satish ji, and all the dignitaries present here. I welcome you all for this very historic event. Historic in the sense that all the stakeholders are together. My insistence for making everyone, requesting everyone to be present here was targeted that because we wanted कि every stakeholder should be present here. राजू भार्गव सर जिनके यहाँ पे प्रांगण में ये बनना जा रहा है, साथ ही साथ अनुपम गहलोत सर जिनका jurisdiction one of the largest jurisdiction in terms of population or in terms of challenges of the traffic and upcoming Commonwealth Games के point of view से सबसे ज़्यादा अगर ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो वो अहमदाबाद सिटी में होगी. साथ ही साथ बिपिन आहिरे सर, he has huge expertise in traffic and he is mentor of this entire concept. This entire concept note was prepared under his guidance. Vinay ji, I cannot thank you in words, and sir, just wanted to bring to your notice that it started with first of all, Honda is one of the few companies which is doing CSR in road safety, and it started with 2 bikes which they wanted to give to Gujarat Police. Then they increased to 50 bikes. Then we discussed with him that there has to be something bigger than that, and he agreed without any hesitation, without even consulting his board. He told that yes, we want to go for Center of Excellence for Road Safety and Traffic Management. Immediately agreed to give 1 crore in CSR, and later on, after a lot of permissions, and it took long time from our side also, and because it required board permission, and finally Honda agreed to give 3 crore for the Center of Excellence. And it is he has put tremendous effort, and his entire team, Taneja ji, Kamal ji, Keyur ji, they have done tremendous efforts to make it happen. And साथ ही साथ यहाँ पे DDO साहब हैं. DDO साहब का I think more than 1000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क है अहमदाबाद में, और उस रोड नेटवर्क पे एज पर आर डेटा लगभग 26% एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो रूरल एरियाज में हो रहे हैं, मतलब रूरल रोड्स पे हो रहे हैं, और 74% एक्सीडेंट जो है वो स्टेट हाईवेज पे हो रहे हैं. तो स्टेट हाईवे की तरफ से आरएनबी की टीम भी यहाँ पे है, यहाँ के लोकल एसडीएम, इसके साथ साथ बाकी कॉर्पोरेट के जहाँ पे जो जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं और उनके एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं, वी इन्वाइटेड ऑल ऑफ देम टू जस्ट शोकेस दैट दिस व्हाट वी ऑल कैन डू इट टुगेदर इन फैक्ट. तो आई विल स्टार्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम. एवरी ईयर आई थिंक 2022 का डेटा अपडेटेड है, उसके बाद में नंबर और भी बढ़ा है. 1.72 लाख पीपल डाइड इन रोड एक्सीडेंट. In Gujarat, every day 21 people die in road accident, and in Ahmedabad rural, 1 person die every day in road accident. The total number of murder in Ahmedabad rural was 38 last year, and the total number of deaths due to road accident were 402. And that amount of efforts all stakeholders put in detection of murder and investigation of murder, it is tremendous if we compare with the traffic. Moreover, my request to all the stakeholders that it's not only a policing problem. It is again the 4E of enforcement. First is enforcement, then education, and then rest of all components. All these things come together, and then only the traffic management happens. So all the stakeholders are requested to commit something. That's why I insisted that everyone should be present here. So this center started with a discussion, a simple discussion when Honorable CM visited in Vitlapur plant. Honda is having one of the largest plant in the world, two-wheeler manufacturing plant, and I think the 1 millionth bike or 10 millionth bike they launched that time. CM sir came. We had a simple discussion that what are you doing?
They told that this is what we are doing in CSR. They also told that we are doing one of the few companies who are doing CSR in road safety. और उससे डिस्कशन शुरू हुआ और उसके बेसिस पे ये सारा एंटायर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ सर. और I thank Bipin Ahire sir that he has put tremendous effort in making it finalize this concept note. And at the same time sir, from here IIT Madras के जो data scientist हैं Professor Rahul Maratte, he is also here, and he is having expertise in analyzing the traffic data. So overall, I would briefly tell about this entire concept of the Center of Excellence. So it's not just about infrastructure. It's not about just buildings, sir. There are a lot of things, lot of minds would be behind it. So it would be having total 6 units, sir. The first unit would be Accident Research and Data Analytics unit. This unit would be analyzing all the accident data of entire state. We'll start with Ahmedabad rural and subsequently with Ahmedabad city and then to the entire state. State Traffic Branch ke SP Sahitya is here. She is doing wonderful work, and she is also a repository of huge data. A lot of data with STB. So we'll be doing research on the data, and so that the enforcement and education, awareness, everything can be in a very targeted manner. Second would be road safety education and awareness wing. अभी सर हमारा सारा जितने भी वीडियोस बनते हैं सर, हम जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं वो हम हमारी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू रखते हैं सर. If we include psychologists into it, if we take feedback from the schools, if we use the technology into virtual reality, augmented reality, तो इन सब के थ्रू सर जो है एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव. तो सर यहाँ पे एक यूनिट होगी जो ट्रैफिक अवेयरनेस के वीडियोस बनाएगी, ट्रैफिक अवेयरनेस की एप्स डेवलप करेगी, ट्रैफिक अवेयरनेस के जो गैजेट्स हैं वो डेवलप करेगी सर. तो एक विंग वो ये होगी सर. तीसरी विंग जो होगी सर वो एक ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फैसिलिटी होगी सर. ये दिस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वुड बी ओपन फॉर ऑल but more exclusively for the government drivers और पुलिस ड्राइवर्स इनिशियली. तो सर SRP की बहुत काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्राइवर्स हैं हमारे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के ड्राइवर्स हैं, उनको सर हम रेगुलरली यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज रखेंगे. साथ ही साथ सर इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू we'll also impart training to outsiders also, so that we can have some revenue stream out of it, sir. Then the fourth unit would be sir the technology and innovation incubator center, sir. So it would be doing research on the things like sir जितनी भी safety measures होते हैं कार में, बाइक्स में, इन सब में. And the reason having this incubation unit is sir Honda being pioneer in safety, in fact across the world, they have the expertise and through which we can किस तरीके से हेलमेट डिज़ाइन करना है, किस तरीके से सर जो बाकी कंपनीज को ब्रेकिंग सिस्टम डिज़ाइन करने हैं, सीट बेल्ट कैसे, इन सब का डिज़ाइन सर will be all the safety measures which are there in the vehicles. We'll be discussing all this in this unit, sir. The fifth unit would be sir emergency coordination cell. वैसे सर हमारी 112 की सर्विसेज वगैरह सब है सर, बट स्टिल सर जो प्राइवेट सेक्टर के पास जो रिसोर्सेज हैं, उनके पास जितने भी सर एम्बुलेंसेज हैं, उनकी खुद की हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, विल बी एग्रीगेटिंग ऑल दोज सर्विसेज and so that we can exchange those services in case of emergency, sir. And the sixth unit would be sir surveillance data analysis and technology research unit, sir. It's more of a sir जो जितने भी सर हमारे अभी नेत्रम के कैमराज हैं, हालांकि सर गुजरात पुलिस इज एनालाइजिंग ऑल दोज डेटा सर, वीडियो उनका जो वीडियो एनालिटिक्स यूनिट जो है सर, बट सर हम वो जो जितने भी CCTV के जो डेटा हैं उन डेटा को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उनमें किस तरीके से और कुछ टेक्नोलॉजी इम्पार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से AI का यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब 6 यूनिट्स होगी सर. और ये जो एंटायर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सर, इट इज़ टोटली फंडेड बाय होंडा. टिल नाउ दे हैव कमिटेड 3 crore rupees. I hope that they would convince your board to give more funds. And there are other automobile companies here who would also become partner with us. And so this is the entire concept of Center of Excellence, sir. And I am really thankful to all of you that you spared. I know, sir, it is extremely busy time because of Rath Yatra, because of a lot of issues. A lot of SRP units are being deployed and everywhere in the state.
Viday took out time out of his busy schedule. Bipin Aire sir, I am really thankful to everyone who are present here, all the stakeholders. But yes, this means that you are owning this entire center of excellence. It's not an initiative of Ahmedabad rule. It's just हमारा एक jurisdiction है और हमारे यहाँ से शुरू हुआ है. बाकी ये सभी का प्रोजेक्ट है एंड इट इज ओपन फॉर एंटायर स्टेट और इनफैक्ट अगर ये बहुत अच्छा करता तो इट विल बी ओपन फॉर एंटायर कंट्री इनफैक्ट जो है. तो इट हैज टू बी वेरी स्टेट ऑफ आर्ट. इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो लेट अस कमिट टुगेदर दैट इट विल बी सेविंग लाइफ. अगर एक साल में 20 लोगों की भी लाइफ बचा पाए तो विल बी सेविंग 20 फैमिलीज. सो विद दिस आई विल कंक्लूड माई स्पीच सर. थैंक यू सो मच.